जिस हिसाब से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बयान निकल कर आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि इजराइल और ईरान का युद्ध पक्का है। फ्रांस के राष्ट्रपति को इतने गुस्से में रिप्लाई दिया, जो कि उनका दोस्त है, तो दुश्मनों का क्या हाल होगा वो तो भगवान ही बता सकता है। दरअसल फ्रांस की तरफ से इजराइल को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगाने को कहा गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगा दिए जाएं, जिससे कि दुनिया पर छाए युद्ध के बादल टल सकें। लेकिन इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि फ्रांस और यूरोप के अन्य देश जो इजराइल पर हथियारों की सप्लाई को लेकर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट गुस्से में इजराइल के पीएम ने यही शब्द यूज किए हैं और इजराइल के पीएम ने कहा कि आप लोग हमें हथियार सप्लाई करने पर रोक लगा रहे हैं, पर क्या ईरान हमास और हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करना बंद करेगा? और उनका गुस्सा किस लेवल पर था वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. इजराइल के पीएम का एग्रेशन देखकर दुनिया का कोई भी इंसान डर सकता है। खैर, इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि इजराइल उसका दोस्त है, इजराइल की रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे। अगर इजराइल पर कोई हमला होता है तो फ्रांस हमेशा उसके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत तौर पे ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और ईरान को चेतावनी दी है कि इजराइल की रक्षा के लिए फ्रांस हमेशा तैयार रहेगा। तो इस एग्रेशन को देखकर कहा जा सकता है कि इजराइल शांत नहीं होने वाला। इजराइल जिस तरह से बात कर रहा है उसे देखकर लगता है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ही हमला करेगा। बाकी आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।